क्या आप एक इंडियन स्टूडेंट है यूएस के ईस्ट कोस्ट में, पास्टन यूनिवर्सिटी में? क्या आपको मैगी खाना पसंद है? क्या आप इंडियन किराने के लिए रुकते हैं? वेल, आई हैव न्यूज फॉर यू। आपको मैगी नहीं मिलने वाली है, आपको इंडियन ग्रोसरीज मिलने वाले हैं। एंड जो भी इंडियन ग्रोसरीज अवेलेबल रहेंगे उसके कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा महंगे होने वाले हैं। एंड इट्स गॉट टू डू विद द होल सिचुएशन इन द रेड सी। This is Ajay Menon. I'm going to tell you exactly what's happening in the Red Sea and its future ramifications. Attacks led to the suspension of several international container shipments through the Red Sea. In the latest, major shipping firms, Mediterranean Shipping Company and CMA CGM said that they were suspending passage through a Red Sea strait vital for global trade. So guys, this is a very different video, a very different side of me. अगर आप मुझे जानते नहीं है, मैं एक लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल हूँ। करीबन 10 साल से ज़्यादा मैं इस फील्ड में रह चुका हूँ। एंड जब भी कोई मुझे शिपिंग के बारे में पूछता है, मैं थोड़ा रॉन स्वानसन जैसे बन जाता हूँ इन दिस पर्टिकुलर शॉट। Hi there. Is there a project you're working on? I know more than you. All right. गाइज, मैं इस फील्ड में रह चुका हूँ करीबन 10 साल से ज़्यादा। लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग बेसिकली मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं मानता हूँ, बट आई डेफिनेटली डू नो लॉट ऑफ थिंग्स इन द ट्रेड। इफ एनीवन आस्क्स मी अबाउट इट, मैं थोड़ा सा रॉन सॉन्सन बन जाता हूँ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट to put all jokes aside, I am going to give you an explainer in the most crudest terms in terms of what is happening in the Red Sea and the whole situation with the Houthi militants and the Suez Canal and all of that. So let's go bit by bit. Firstly, let me explain to you what is the situation right now. The Red Sea is a very, very important route in global trade, and it basically is the entry point or the exit point to and from the Suez Canal. सुएज कनाल एक ऐसी कनाल है जो मैनमेड है, इजिप्ट में है। एंड ये जो नैरो सा एक टोल नाका है, लिटरली आई कैन कंपेयर इट टू दहीसर टोल नाका। मुंबई का नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज लिटरली द पैसेज पॉइंट बिटवीन एशिया एंड यूरोप, एंड इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर ग्लोबल ट्रेड। सो पहले के जमाने में क्या होता था कि जो ट्रेड रूट्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन भारत यूज्ड टू ट्रेड विद द मिडल ईस्ट, पर्शिया एंड यूरोप एंड ऑल दोस कंट्रीज, सारे शिप्स अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका से होके घूम के पूरा एक चक्कर मार के आते थे टुवर्ड्स इंडिया एंड देन फर्दर ऑन टू द फार ईस्ट एंड चाइना एंड स्टफ लाइक दैट, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा एज वेल. Now when the Suez Canal was introduced, it really was a game changer for trade, because जो transit time, जो समय लगता है for one container ship or one vessel to reach from point A to point B, reduced considerably. I mean, it's right now saving more than 10 to 14 days of travel time on the oceans, which of course is a huge cost saving mechanism in today's very, very tough times for global trade. So yeah, the Suez Canal is one of the most crucial choke points of global trade. And यहाँ पे बहुत सारे ships पास होती है, container ships है, ऑयल टैंकर्स है, एलएनजी वाला जो गैस वाले शिप्स है वो है, फर्टिलाइजर वाले शिप्स है, बल्क वाले शिप्स है जहाँ पे आयरन ओर वगैरह सब कैरी होता है, एंड ऑफ कोर्स कार्स वाले जो वेसल्स है जो कार्स को कैरी करते हैं, एवरीथिंग, ऑल टाइप्स ऑफ शिप्स पास थ्रू इट. एंड इन दिस वीडियो आई एम स्पेसिफिकली गोइंग टू स्पीक अबाउट कंटेनराइज कार्गो. दैट्स माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. एंड जो आपकी मैगी है, जो आपकी इंडियन ग्रोसरीज है, वो सारे ये कंटेनर्स में ही आते हैं. तो भैया सबसे पहले क्या होने वाला है कि इजिप्ट के तो लगने वाली है, बिकॉज इजिप्ट ऐसी कंट्री है जो सुएज कनाल में काफी डिपेंडेंट है फॉर इट्स इकोनॉमी. एज आई टोल्ड यू, दहीसर Cheknaka, that is literally Egypt, because they get a lot of toll money. Any ship that passes through the Suez Canal has to pay a toll. So, ये choke point ऐसा है कि भाई इजिप्ट ने बहुत फायदा उठाया है, and of course, they are going to really get affected by it, because उनका तो पूरा एक ये जो income stream है वो completely zap out होने वाला है. Basically अभी क्या हो रहा है is that because of these militant attacks, they're using drones, missiles and whatever. I'll not get into the technicalities. जो सारे जहाज है, they are now bypassing the Red Sea and they're taking the old route. शायद आपने एक मूवी देखी रहेगी, कैप्टन फिलिप्स, जहाँ पे टॉम हैंक्स was playing this was a real life incident. Basically Somalia, which is again very close to this particular sensitive area in the eastern shores of Africa, काफी obviously poverty थी. Somalian pirates
they really took advantage of the whole situation. They began hijacking ships. Now you have to understand that these are not naval ships. मतलब ये जो container ships है ना, मतलब they have no ammunitions and everything, and they have about 7 to 8 crew members who are mainly from India and Indian subcontinent and across the world, and they are the ones who basically have no means of fighting back. So जब ये सोमालियन पायरेट्स आए थे, वो जो मीम काफी पॉपुलर हो गया था, आई एम द कैप्टन नाउ लुक इनटू माय, Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the captain now. I mean, that was a scary real life incident there. And, basically to kill off piracy in Somalia, what happened is that the naval forces of the countries began to come in, and they assisted. जो ships अकेले जाते थे, isolated जाते थे, which was easy target for Somalian pirates. They started going together, like ships started waiting at a certain point, and then they started going together as a group. So it becomes difficult. But ये जो group है, they are far more advanced than the Somalian pirates. I mean, they released a whole video of guys coming down from a helicopter and hijacking a ship. I mean, this is next level stuff, man. I mean, Somalian pirates तो बेचारे लल्लू पंजू थे in comparison to these guys. हालांकि Somalian pirates wanted money, but these guys, they just want the whole trade to be disrupted. आपने ग्लोबल न्यूज शायद आपने पढ़ा रहेगा ड्यूरिंग द कोविड टाइम. देयर वाज अ शिप नोन एज द एवर गिवन करके एक शिप था जो सुएज कनाल में बेसिकली लटक गई, मतलब अटक गई, टेढ़ा होके. इट वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर. इट बिकेम अ ह्यूज पॉप कल्चर थिंग, मैन. आई मीन, मैंने एक वीडियो देखा था, एक अमेरिकन बंदे ने कुछ प्ले स्टेशन मंगाया था चाइना से, एंड ही वेंट ऑन टिकटॉक एंड ही वाज सेइंग दैट भाई मैंने क्या गलत किया लाइफ में कि मुझे मेरा प्ले स्टेशन नहीं मिल रहा है. सो व्हाट हैपेंड इज बिकॉज इट ब्लॉक्ड द सुएज कैनाल फॉर सो मेनी डेज, all the vessels had to either wait outside and wait for their turn to pass through, and once the Ever Given was cleared, then only basically the traffic eased out over there. A lot of vessels actually took the long way, which is again happening right now. So the extra transit time, as I told you, is going to be a major thing. All your things, if you're in Europe or US, are going to come late to you because, of course, America ho, Canada ho, या Europe ho, उन लोग काफी import करते हैं from Bharat, from China, from Far East Asia, Bangladesh, all these countries. So things are going to take a lot longer to reach you, and that's the first major impact. The second is, of course, the ocean freight. So ocean freight एक ऐसा cost है जो एक container को attach रहता है. मतलब it is just like a flight ticket. Like if I book Mumbai to New York, every seat has got a price, right? So again, that varies. Peak season में महंगा रहता है, off season में कम रहता है. So similarly, containers का भी ऐसा रहता है कि when the trade is high, the freight rates are high. When the trade is low, the freight rates are low. So what is going to happen is that now, because of this, the longer transit time will add some costs, and overall confusion, disruption is going to skyrocket the ocean freight rates. It's going to reach peak levels. कोविड के टाइम में हमने देखा था कि जो कार्गो का वैल्यू था वो कम था, बट जो फ्रेट कॉस्ट था वो ज्यादा था. So this is the second major thing, or rather the third major thing that's going to happen. Just to recap quickly, first was the Egypt economy getting screwed, second was the transit time getting longer, and third was the ocean freight rate getting high. The fourth impact, if I look at it from an Indian angle, Indian exporters को बहुत भारी पड़ने वाला है, because आप वैसे भी देखो भारतीय एक्सपोर्टर को compete करना पड़ता है against the low prices of China, मलेशिया एंड इवन बांग्लादेश फॉर दैट मैटर. मतलब अगर आप कोई गारमेंट देखो, टी शर्ट देखो, आजकल सब मेड इन बांग्लादेश है. तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को तो वैसे भी मतलब एकदम एक मुश्किल एक सिचुएशन में है. तो जब ये ओशन फ्रेट का रेट बढ़ेगा तो उनका जो कॉस्ट एलिमेंट है, प्रोडक्शन कॉस्ट एलिमेंट, वो भी बढ़ने वाला है. सो इट्स दे गोना बी इन अ बिग सूप राइट नाउ. एक तो वैसे भी लगे पड़े थे टू कम्पीट अगेंस्ट दीज गाइज, लो बॉलिंग एंड creating everything at a fraction of a cost. And for the Indian exporter, now it's going to get much more tricky to really compete and stay relevant in the market. तो इससे क्या होगा कि exports down हो जाएगा तो foreign जो अपना dollars आ रहे हैं इंडिया में वो कम होंगे, and it's going to impact the economy in the long run. In fact, at this time, this is winter time, बहुत सारा Indian exports जाता है to Europe, especially in the form of grapes. We are an agrarian economy. We export a lot of agro products, and ये grapes का season है बॉस. और grapes है ना एक ऐसे type of container में जाता है जो जिसको reefer बोला जाता है, which is temperature controlled. And obviously grapes का shelf life होता है
अगर ज़्यादा टाइम वो रहेगा बाहर तो खट्टे हो जाएंगे, grapes are sour, sour grapes is literally going to happen because बहुत सारे containers are already on their way. So there is a lot of uncertainty when it's going to arrive. In fact, there was a shipment which was destined for Jeddah. तो मुंद्रा गुजरात से जेड्डा is 8 days only. अब ये सब अटैक्स वगैरह सब हुआ, अब ETA जेड्डा पता ही नहीं है, 8 का 80 दिन भी हो सकता है. तो जस्ट इमेजिन ग्रेप्स का क्या हालत होगा. एंड so on and so forth, all these commodities that have a shelf life like pharma, even pharma products go in these reefer containers, everything is going to be affected. So the Indian exporter is going to really have a tough few months down the road. Basically, just to sum everything up, global trade is going to be going to be in a disarray right now, and काफी impact आने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली हर जगह पे, शायद कोई products मिले ना मिले, scarcity के कारण inflation बढ़ जाए, तो this is a very very tough time for the world right now, and I just hope that things come back to normal and shipping comes back to normal, and I hope you found some value in this video. ये एकदम एक layman explanation था, तो अगर आपको इसमें कुछ relevant लगा तो definitely share with your friends and colleagues who possibly want to know what's happening in the situation, and definitely like and share to all the friends who are in this particular line of business. And I try to keep it as simple as one can, and I hope you can comment with your thoughts. And just a simple request, I know बहुत sensitive topic है ये, तो try to keep the comments civil as possible, and any queries you have with shipping, logistics and international business, do comment below and I'll reply to as many comments as I can. This is Ajay Menon, and signing off from this video right now. I hope you guys have a good one, and I will see you guys in another video soon.